Okay, so in yesterday's class, so many people pinged me and so many people asked me a question about syllabus. Okay, what syllabus and what all things we are gonna cover in this training program. So first of all, guys, this is 5 days training program is free for you all, everyone. You can enjoy, you can learn, you can ask me a lot of questions, you can compile what you want to do, uh, how do you want to begin with your career into cloud, and how really it will make a value for you guys. Okay, so enjoy this training, 5 days training with me. I will be here to help you out solving your queries, answering your questions, whatever, to beginning with your career, beginning to the cloud career. I'm open to answer your questions on especially in Azure, GCP, and Kubernetes domain. I'm expert on those platforms. Okay, so the first question everybody asked me about syllabus. What is the syllabus? So guys, whatever training we are offering for Azure, in this we cover AZ104, which is Azure Administration, and AZ305, which is Architect. So both of the certifications we cover up into a single training. Uh, this is the one. I'm quickly sharing you what all content we are sharing up. I'm sharing this only because somebody's asked. My intention is not to push out any course or any training to you guys. This is just a free masterclass. Okay, or whatever you want to take it up positively from this, you can take it up. So the training program, what full training program, what we are covering, nobody does cover that. What we cover, showing you very quickly, like the module in this training, we are covering AZ104 and AZ305. This is the one. This is the one we are covering. This is not right. Basically, this is older one. Now it goes basically 30 days, 30 to 35 days. Okay, 30 to 35 days, and it is around 60 plus hours. Okay, that's the one. Okay, this is the module. This is the course basically we are covering up in this training program, and much more a part of this Microsoft bottom line, like in realistic scenarios, realistic uh, implementation, realistic project, like you want to prepare something on a realistic project. I will help you out, pick it up the right project, and prepare yourself for interviews and jobs and all. So all of these things, देखिए भाई कैसा है कि if you built a right knowledge, okay, if you built a right knowledge, and let's say you are working on an as a system engineer, but you built a knowledge with the experts and with the trainers, like equal to 2 or 3 years cloud engineer, right? You can represent that knowledge to a next company, like you're currently working on a project, and they will ask you about some projects, some real time projects things. So that I will help you how you can make that knowledge, how you can make that real project presentations and all these things, and this is how you can uplift. Okay, now, creating and managing your resources, managing virtual machines, and so many things into that, like desktop workload, performance configuration, ARM networks, ARM VMs, design implementing ARM storage, okay, monitoring ARM VMs, and all those things. These all under the section one. This is quite big. Okay, design and implement storage and data strategy check implementation. So all of these storage related services and features and capabilities are there. Azure Storage Blobs, storage files, implementing Azure Storage, managing access, controlling Azure SQL database, document DB, Redis cache, and Azure Search, and all those things. How big data management and analysis do you do using an Azure Search, and all those things that we do cover. Design and implement storage and data strategy. So many other things are there related to the storage. Design and implement Azure PaaS compute and web and mobile services, like
Azure App Services, implementing Azure functions, API management, Azure API services, deployment, Azure services. Okay, logic applications. Okay, app service, mobile apps, implementations, design and implement Azure services, Fabric application. These all things are there. A part of this there are a lot of network services we will do. Okay, more than 15, 10 to 15 network services, like for example active directory integrations like DNS, DHCPs, network routing, VPN, scale set. Okay, availability set, and so many other additional services, which are really required but which are not part of the course that we do. So I will cover up more than 22 different services a part of this. So many different labs we do cover up. Okay, all of these different types of labs we cover up, including VPN. Okay, and including network, DNS, DHCP, and active directory. All of these different labs we do cover in this training program. Okay, so many labs: load balancers, active directory integrations, network performance monitor, firewalls, storage, everything. Okay, some sort of RMS we will cover up, like in scripting, and also how you can do this automated through the scripts and all those things. So these all are the syllabus what we are gonna cover up in this training program, guys. Okay, so later on at the end, you guys can ask me a question. So if anybody has a questions, you can put that into a chat box as well. I will look at into it and I will respond back to you. Okay, so that was the syllabus part. Now I'm jumping back to the, uh, you know, the continued topic what we were discussing yesterday. Okay, we just had a basic understanding about the cloud, and I explained you in and out about that. Let me open up my whiteboard. I will just give you a quick recap what we did yesterday, what we discussed yesterday, so that you will be in line with that thought and with that mindset with this. All right, give a moment to load this. Yeah, I think this is the one. Okay, so we are here, guys. Okay, so I explained you yesterday generation one, legacy or monolith data center. What was that data center? How it was costing us in terms of managing data centers on your uh, companies. Then second generation came up, which was generation two, virtualization generation, and how virtualization generation turned up completely picture of monolith data center and brought up an virtualization where we could save approximately 50% hardware cost. Then third generation came up, which is cloud computing generations like AWS, Azure, GCP, Oracle Cloud, and so on, what today we are using. How this cloud computing generation works and how that data centers, where that basically comes from, how that different cloud providers are differs to each other, that everything we discussed, right? We discussed in depth in detail about this. After that, generation 4, which is containerization. So containerization, that means microservices. Okay, so now today we built and developed our services in the form of container, in the form of microservices. So container basic microservices, इसको क्यों कहते हैं? इसको microservices इसीलिए कहते हैं कि एक जब कंटेनर क्रिएट होता है, कंटेनर एक्चुअली एक छोटा वर्चुअल मशीन्स का एक छोटा पार्ट है. इट इज नॉट अ कंप्लीट वर्चुअल मशीन. ये itself that component is a small. A part of this small component, what else is?
when a कंटेनर कम अप, ओके, कंटेनर, यदि डॉकर की टर्मिनोलॉजी में हम लेंगे तो उस कंटेनर को हम पॉड कहते हैं, पॉड। सबकी अलग अलग टर्मिनोलॉजी है। Very well known terminology which is brought up from the Docker and Kubernetes. So we call as a pod. So pod, that means what? A small tiny virtual machine. जो virtual machine होता है उसी तरह का एक virtual machine है, but इसमें क्या होगा, कल मैंने explain किया था, okay? In this virtual machines, let's say this is a virtual machines, you have only two things here. One is dependency and another one is application. ओके, इसमें कोई कर्नल नहीं है। इट इज बूटिंग फ्रॉम वन कॉमन कर्नल, एक कॉमन कर्नल से ये बूट होगा, ओके, जो आपके होस्ट पर होगा, ओके। होस्ट के कॉमन कर्नल को, सॉरी, होस्ट इज हियर, होस्ट के कॉमन कर्नल से ये बूट करेगा, ठीक है। तो इसको हम पॉड कहते हैं डॉकर और कुबरनेटिस की टर्मिनोलॉजी में। और जब एक पॉड क्रिएट होता है तो उस पॉड को डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए, स्टोरेज से कनेक्ट करने के लिए, नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए, दूसरी और सर्विसेज से कनेक्ट करने के, लाइक लाइक ऑथेंटिकेशन के लिए आपके पास की वॉल्ट है या एक्टिव डायरेक्टरी है या डिजिटल सर्टिफिकेट्स है, विच एवर। सो व्हेन वन पॉड गेट्स क्रिएटेड, उस पॉड को रन करने के लिए कई सारी सपोर्टिंग सर्विसेज बिल्ट होती है, राइट। एक पॉड को रन करने के लिए 10 से 15 छोटी छोटी सर्विसेज उसके साथ कनेक्ट होती है, क्रिएट होती है और कनेक्ट हो जाती है, राइट। तो सोचो कि 100 यदि पॉड सडनली क्रिएट होते होंगे तो thousands ऑफ सर्विसेज ऑटोमेटिकली गेट्स क्रिएटेड, automatically gets connected to each other, as per the require, as per the it's an algorithm, as per the requirement, as per the architecture, it gets connected. When your pod is deleted, when your pod is vanished, all the required services also gets vanished. तो ये छोटी छोटी कई सारी सर्विसेज को मिलकर ये कुबरनेट, ये पॉड और कंटेनर वर्क करता है, इसलिए इसको माइक्रो सर्विसेज भी कहते हैं। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज ए माइक्रो सर्विसेज। You got it? Now, this is just an overview. Overall, I have explained you. When we go into a deep down and dig down into it, core technical terms, I will explain you in the better way. All right, guys. So we were here. We discussed a lot about all of these things. We discussed a lot of different silly questions. That could be silly for someone, but that could be most important for the other one. So we discussed all of these things now. Now I'm moving forward to take you to the core model. So when we want to deploy, when we want to understand any of the cloud model, okay, let me take you an example. Like when take an example of any motorcycle, okay, any motorcycle has got a basic foundation model. What is that basic foundation model? That motorcycle should have two wheels, it should have a handle, it should have a gearbox, it should have a clutch and brakes and all, it should have a sitting arrangement, right? ये क्या है, एक बेसिक उसकी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद अब अलग अलग मॉडल्स है, अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स है, वो अलग अलग मॉडल बनाते हैं। उसी तरह से क्लाउड कोई भी प्रोवाइडर हो, whether it's an Azure cloud provider, whether it is an AWS, whether it is GCP, Oracle Cloud, IBM software, anyone, any cloud basically works based on three most important pillars, और any cloud offers a service, इसको इस तरह से कहते हैं, ये उसके वर्किंग पिलर्स नहीं है, सर्विसेज ऑफरिंग है। Any cloud provider basically offering services into three model. All right. And again, I repeat, any cloud provider offering their services into three different model. Now you choose which model you want. You choose what you want. All right. That's the same way. So इसको understand करने के लिए सबसे पहली primary requirement क्या है? What is very, very primary requirement? इन एनी डेटा सेंटर, कोई भी डेटा सेंटर का एग्जांपल लेते हैं, सो एनी डेटा सेंटर हैज गॉट दिस 9 सर्विसेज। इस 9 सर्विसेज को मिलकर कोई भी डेटा सेंटर बनता है। फॉर एग्जांपल, वेरी फर्स्ट यू नीड अ नेटवर्किंग, राइट?
First base foundation of any of the data center is a network. Second one is you need a storage. Okay, आपको storage चाहिए. Third, you need a servers. Okay, just one moment, guys. All right. So you need a server. Then after that, you need a virtualization. Servers के ऊपर virtual layer है. I explained you yesterday as well. After this virtual layer, you have an operating system. Okay, what operating system you want to create for your virtual machines? Okay, then you have a middlewares. Middlewares, that means what? All your service packs, all your supporting hardware drivers, component drivers, storage drivers, okay, and agents and all. Those all are your middlewares. Runtime मतलब क्या होते हैं? OS patches. All of your OS patches, your application patches, लाइक किसी एप्लीकेशंस को रन करने के लिए जावा रन टाइम चाहिए, किसी एप्लीकेशंस को रन करने के लिए उसका सपोर्टिंग प्लेटफॉर्म रन टाइम चाहिए. सो ऑल ऑफ दीज आर रन टाइम एंड मिडिलवेयर्स आर टू डिफरेंट थिंग, गाइस. डोंट गेट कंफ्यूज्ड अबाउट दिस. Middleware is all more correlates to your infrastructure, and runtimes are most correlated to your applications. Now data, whatever data you want to store, whatever data you want to keep on your data center. Okay, and then applications, what applications you are running. So इतनी सारी ये 9 चीजों को मिलकर डेटा सेंटर बनता है. और ऑन प्रोमाइज डेटा सेंटर, ऑन प्रोमाइज टर्म मतलब डेटा सेंटर विच बिल्ड्स इन योर ऑफिस. आपके ऑफिस में जो डेटा सेंटर बना हुआ है उसको ऑन प्रोमाइज डेटा सेंटर इस टर्म से हम कॉल करेंगे. ठीक है, तो ऑन प्रोमाइज डेटा सेंटर में एवरीथिंग इज मैनेज्ड बाय यू. You are the one who manage everything. Network is your responsibility. Storage, servers, virtualization. आपका virtualization crash हो गया. It's your physical data center, right? At your office. You have to manage that. Okay. Operating systems, middlewares, runtime, data, application, everything is your responsibility. तो cloud का क्या advantage है? जैसे कि मैंने बताया कि cloud offering its services into 3 models. सबसे पहला मॉडल है infrastructure as a service. All right. So infrastructure as a service means what? What do you mean by that? Infrastructure, that means आप infrastructure cloud provider से लेंगे और उस infrastructure पर जो भी आपको build करना है, that everything you will take care. I will tell you, I'll take you with the very small funny example, right? Let's say you are renting a flat. Okay, you are renting a flat. अब ये फ्लैट रेंटिंग अवेलेबल है 3 मॉडल्स में. इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस मतलब क्या होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस मतलब आपको फ्लैट मिला है. ओके, उसमें कुछ नहीं है, ओनली एम्प्टी फ्लैट. ओनली आई गिव यू अ पावर सप्लाई, वाटर सप्लाई, and all housekeeping and everything. That's it. Only this basic. And then you have a house, door, windows, locks, everything. ये basic amenities, basic connectivity, that's it. Everything उसके बाद whatever amenities you want to bring. You want to bring a fridge, you want to bring a washing machine, you want to bring whatever, you bring your own, you develop your own interior and everything, and you live in that house. Okay, ये हुआ infrastructure. I provided you basic infrastructure, rest you do whatever you want. Similarly, in cloud, infrastructure as a service, that means the green will be provided by a cloud provider. Like networking, Azure will give you network, Azure will give you storage, Azure will give you server, Azure will give you virtualization. बस उसके ऊपर what operating system you want to install, you bring up your own. अब उस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए क्या मिडिलवेयर चाहिए, क्या सर्विस पैक चाहिए, क्या ड्राइवर चाहिए, यू टेक केयर. आपकी एप्लीकेशंस के लिए क्या रन टाइम चाहिए, दैट इज योर हेडेक. आपका डेटा क्या होगा, उसका बैकअप कैसे होगा, उसको मेंटेन कैसे करेंगे, उसका रिटेंशन कैसे होगा, दैट इज योर प्रॉब्लम.
Your applications is your problem. So this all blue is our problem, and green is managed by Microsoft. So this is infra. They are providing only infrastructure. Rest you take care about your things. This is infrastructure as a service, my friends. So इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में आपको अज्योर पर आप जाते हो तो अज्योर आपको एक सर्वर देगा, उसको मैनेज करने के लिए GUI GUI देगा. रेस्ट यू डू वॉट एवर यू वांट, राइट? दैट इज द वन. अब इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में कौन कौन सी सर्विसेज आती है, आई विल टेल यू. ओके, नाउ नेक्स्ट इज प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस. प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में आपको पूरा प्लेटफॉर्म रेडी करके देंगे. Again, I'll take you to the house example. प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में आपको एक ऐसा हाउस दिया जा रहा है जिसके अंदर हाउस है, वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है. ओके, इसके अंदर फ्रिज है, सोफा सेट है, इंटीरियर है, किचन है. ओके, गैस कनेक्शंस है, ये सारी बेसिक एमिनिटीज, एयर कंडीशंस है. दैट्स अ एंटायर प्लेटफॉर्म. व्हाट यू नीड टू डू, you need to bring your own belongings, like your cloths. You need to bring up your own, let's say, crockeries. All crockeries you buy and bring it up, and basic services you bring it up, and you start living here and enjoy it. I am giving you all the infrastructure and platform, everything. You bring up your personal belongings and your grocery and cook and start using. Okay, that is, you cook your own, you maintain your own groceries, own personal belonging and stay. आप अपना किराना सामान ले आओ, पर्सनल कपड़े ले आओ और रहना शुरू कर दो. दिस इज अ प्लेटफॉर्म. कमिंग बैक टू द क्लाउड प्लेटफॉर्म में आपको नेटवर्किंग विल बी प्रोवाइडेड बाय क्लाउड, स्टोरेज, सर्वर्स, वर्चुअलाइजेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, मिडिलवेयर, रन टाइम. दिस एवरीथिंग इज मैनेज्ड बाय, प्रोवाइडेड बाय Azure. ओनली योर डेटा एंड योर एप्लीकेशन. आपको प्लेटफॉर्म मिल गया, आपका डेटा और आपकी एप्लीकेशंस आप मैनेज करिए. रेस्ट एवरीथिंग इज टेकन केयर बाय Azure. यदि आपका OS क्रैश हो गया, Azure विल टेक केयर. मिडिलवेयर का प्रॉब्लम है, अपडेट्स का प्रॉब्लम है, Azure विल टेक केयर. सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्किंग का प्रॉब्लम है, Azure विल टेक केयर. राइट? ओनली डेटा एंड एप्लीकेशंस इज योर लुक आफ्टर. दैट्स इट. दैट्स अ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस. फॉर एग्जाम्पल, आपने Azure की सर्विस ली है, Azure MySQL डेटाबेस. तो Azure MySQL डेटाबेस लिया तो आपको MySQL डेटाबेस क्रिएट करके दे दिया जाएगा, डेटाबेस सर्विस दे दी जाएगी. अब उस डेटाबेस का बैकअप, मैनेजमेंट, सर्विसेबिलिटी, अवेलेबिलिटी सब Azure देखेगा. लेकिन उस डेटाबेस में क्या क्रिएट करना है, मतलब कैसे आप टेबल क्रिएट करना चाहते हो, कैसे आप डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहते हो, वो आप देखो. आपकी एप्लीकेशन के साथ उसको कैसे इंटीग्रेट करना चाहते हो, वो आप देखो. इट इज अ डेटाबेस रेडी टू यूज. उसको कॉन्फ़िगर कैसे करना है, दैट इज योर लुक आफ्टर. सो यू नीड अ डेवलपर, यू नीड योर ओन डेवलपर. प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में आप सर्विस लेते हो, उस सर्विस को कॉन्फ़िगर करना, डेवलप करना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो यू नीड ए डेवलपर हियर. इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में आपको दो लोग चाहिए. आपको इंफ्रास्ट्रक्चर का भी आदमी चाहिए, हु कैन डिप्लॉय OS, मिडिलवेयर एंड ऑल, और आपको डेवलपर भी चाहिए जो डेवलप भी करेगा. दैट मीन्स यू नीड टू पीपल, इंफ्रा एंड डेवलपर. ओके, दिस इज प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, गाइस. थर्ड मॉडल इज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. यू डोंट नीड एनी वन. आपको जो सॉफ्टवेयर चाहिए वो सॉफ्टवेयर रेडी टू यूज है. You just select that software and start using it. That's it. You need not to do anything. Example, आप Gmail यूज कर रहे हो, ये क्या है? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. Gmail को कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको कोई आदमी चाहिए? नहीं. Gmail का बैकअप, डेटाबेस, सर्वर अपडेट आपको कुछ चाहिए? नहीं. इट्स अ रेडी सर्विस, यू आर जस्ट यूजिंग इट. दैट्स इट. That is a software as a service, my friends. All right. So again, an example, house का example लेता हूँ. You might be getting bored about this, but still, you got a house जिसमें everything is there. Okay, you just go. There is a grocery, there is a kitchen, there is a cook, there is everyone. Just like a hotel, you go into hotel. You just go, pay money, order whatever you want, take it and start. No, you enjoy it. You stay and enjoy it. Everything is managed by hotel. Right? So that's the software as a service. So I gave you three examples to make you understand simple and better.
दीज ऑल आर थ्री मॉडल्स। अब ये तीन मॉडल्स में सर्विसेज अवेलेबल है। ओके, और तीनों मॉडल की अलग अलग सर्विसेज हैं। ओके, अब आपको जो सर्विस लेना है, आप जब कोई सर्विस पिकअप करते हैं तो वो उसके डिस्क्रिप्शन में बताया जाएगा कि ये सर्विस प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है, पैस सर्विस है। मतलब आपको समझ जाना है कि पैस सर्विस है, अच्छा, दैट मीन्स आई विल नीड अ डेवलपर, आई विल नीड एन एक्सपर्ट हु विल कॉन्फ़िगर और डेवलप दिस सर्विस। ओके, अच्छा, कोई सर्विस आप पिकअप करते हो, उस सर्विस के डिस्क्रिप्शन में बताया है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस है। इसका मतलब आपको समझ जाना है कि ओ, I need an infrastructure guy also to deploy it, and then I need a developer guy also to configure and develop it. Deploy and development is involved. Platform as a service only, development is involved, and software as a service में कुछ भी involvement नहीं है. You just take it and use it. Got it, guys? तो ये तीन अलग अलग चीजें हैं, तीन अलग अलग तरीके से आपको डिस्क्रिप्शन पढ़ना है और आपको समझ जाना है कि आपको किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी, कौन सी सर्विस है। तो अच्छा, अब इसका एक इंटरव्यू क्वेश्चन होता है। विदाउट दिस क्वेश्चन आपका क्लाउड का इंटरव्यू इनकम्प्लीट होगा। दैट्स माय चैलेंज। एनीबडी विल आस्क यू, हे, tell me what is an infrastructure as a service. So you explain them in the way I explain. Okay, so infrastructure as a service, where Microsoft or any cloud provider is bounded to provide a foundation infrastructure, includes network, storage, server, and virtualization. Rest operating system, middleware, runtime, data, and applications are our responsibility. We require an infrastructure deployment expertise and the applications development expertise to utilize infrastructure as a service. इतना तो कम से कम आपको इंटरव्यू में आंसर देना होगा। उसी तरह से प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के लिए, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज इज अ मॉडल, एज अ सर्विस मॉडल ऑफर्ड बाय क्लाउड प्रोवाइडर, वेयर दे गिव अ रेडी प्लेटफॉर्म फॉर एनी सर्विस. We just have to take care about the data and the applications development. That's it. Rest operating system, servers, virtualization, everything is taken care by the cloud provider, and we as an owner of the application and data have to manage. That's it. Now, to utilize platform as a service, we need a developer expertise. Wow, wonderful, great answer. ऐसे आपको आंसर करना है। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का पूछा जाए आपको क्वेश्चन, तो आपको बताना है कि ओ, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस इज द फैंटास्टिक सर्विस। आप इस तरह से बात कर सकते हैं जैसे कि आप खुद से बोल रहे हैं, एक कोई रटा रटाया डेफिनेशन नहीं। सो आप इस तरह से भी बोल सकते हैं जैसे कि मुझे कोई किसी ने इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा, आई वुड आंसर लाइक, a software as a service, that is one of my favorite model, because this model basically used by everyone and preferred by everyone, because they don't need any expertise into it. Okay, anybody wish to, they just pull out this service and start using it. We don't need any development expertise, we don't need any infrastructure expertise. That's it, it's a ready to use service. Pick up from the marketplace, configure as per we want, and start using it. Everything including network, virtualization, storage, servers, middlewares, applications, data, everything would be taken care by the cloud provider. So we need not to bother about this. This is fantastic, very, very interesting. This is my favorite domain. Wow, wonderful, great answer. So this is how you need to answer. Immediately next question hoga, okay, hey Dinesh, can you tell me three or four platform as a services examples? You should know at least five services. Somebody will ask you, hey, can you tell me a five example of infrastructure as a service? Can you give me some examples of software as a service? Somebody definitely will ask you this question. I will recommend you one small URL for that. Okay, go to Google and type here Azure infrastructure as a service, और कोई सी भी सर्विस दे दो और उसकी लिस्ट. ओके, सो गो हियर Azure charts. Azure charts करके ये वेबसाइट दिखेगा. Azure chart is off. The service is currently disabled due to budget restriction. Oh my god, yesterday it was working.
Okay, fine. Okay, so I will basically give you the list. I will give you a basic list of this. Okay, I will give you the list, another list what I have prepared few services of infrastructure as a services. तो ऐसे Google पर भी आपको मिल जाएगा. So platform as a service you will have so many, and see more you can have many services list. Okay, so I will give you a handy list which will be more useful to you guys. That link was fantastic till yesterday it was working. Okay, I'll share you another one. Okay, cool. So this is basically your cloud model, guys. Okay, minimum 5 to 6 services you need to keep in your mind, always ready. Anybody's asked, just throw out those. Okay, now you are an infrastructure guy, so infrastructure, network, storage, computing, IoT, इससे related services आपको याद करके रखना है. You are not a developer, so you don't go with the development services. Okay, I will give you hundreds of services list from each of the model. I'll put that links in my document on the chat box. You can refer to that. Okay, cool, guys. Now, moving forward, yesterday already we discussed about a traditional infrastructure data center, where you have a physical data center, or physical data centers के क्या-क्या challenges हैं. So when we talk about physical infrastructure, you need to invest money upfront. Okay, you need a lot of hardware configuration and setup to be done, and there is a lot of setup required, a lot of configurations required to do this. Okay, and there can be a lot of maintenance cost. Okay, involved. Whereas when you talk about your cloud, so cloud basically no initial cost you need to pay upfront. You just start using your infrastructure, create services and start it. आपको पहले immediately upfront कुछ भी pay नहीं करना है. You just create your subscription, start using it. Okay, now use service and forget about anything. Forget about infrastructure management, your backup management, your service management, or anything. You need not to do anything, guys. Okay, now you can terminate your services whenever you want, and the moment you terminate it, you'll not be charged anything. Azure cloud provider has got 1,000+ business services, whatever you need today. Okay, now coming back to a virtual machine component. यदि आपको एक virtual server बनाना है, quick virtual server बनाना है to host your service. Okay, आप एक सिस्टम इंजीनियर है, आपको कहा जाए कि hey, we want to host a service, we want to host a website, and help me to prepare a server quickly. How do you do that? How will you do that? Okay, so simply when you create a virtual machine, there will be a 12 component, but rest other component would be optional. These 6 components are mandatory. सबसे पहला component है virtual machine. Okay, सबसे पहला component है virtual machine. Virtual machine में एक्चुअली 3 चीजें होती है. वर्चुअल मशीन ये जो कंपोनेंट है इसमें 3 चीजें होती है. पहला OS, operating system. Which operating system you want to choose, that is a part of this. Okay, Microsoft Marketplace will have a thousands of operating system. दूसरा कंपोनेंट होता है इसमें साइज. Okay, sizing actually will have your RAM and processor. RAM, processor, OS disk. Okay, RAM, processor, OS disk, और उसका rest other performance. Okay, sizing. Third would be your images. Okay, what image you want to choose? You want to have any custom image, you want to take up any custom image of your application or operating system, external extensions, this will be part of your virtual machine. Okay, तो जब आप virtual machine choose करते हैं ये 3 चीजें उसके अंदर होगी. I will show you that. Network interface, next most important component is a network interface. If you don't have that, your virtual machine would be standalone, will not talk to anything, any other services.
NSG, Network Security Group. NSG is basically responsible to protect from what is coming in your network, what is going out. तो ये एक तरह का एक mini firewall है. Okay, this will protect what services can come in, what services can go out. All right, this is basically your NSG. Perfect. यहाँ से आपको कौन सा प्रोटोकॉल अलाउ करना है, बाहर से एक्सेसिबिलिटी अलाउ करना है कि नहीं, दैट एवरीथिंग यू कैन डिफाइन थ्रू एनएसजी. दिस इज बाय डिफॉल्ट, इट्स देयर, यू कैन नॉट इग्नोर दैट. नाउ डिस्क, दिस यहां पर भी आपके पास साइजिंग में डिस्क है, यहां पर भी डिस्क है. दिस इज एन एडिशनल डिस्क. यहां पर साइजिंग के साथ जो डिस्क आती है दैट इज अ ओएस डिस्क विच इज 127 GB फिक्स. उसके अलावा आपको 1 TB का डिस्क स्टोरेज चाहिए, डी ड्राइव, आपको 500 GB चाहिए, 2 TB चाहिए, वट एवर यू वांट, दैट एन एडिशनल डिस्क यू कैन क्रिएट एंड अटैच. प्राइवेट आईपी एड्रेस, आपके वर्चुअल नेटवर्क, आपके अज्योर क्लाउड में आपने मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स बना दिए हैं एंड यू वांट देम टू कम्युनिकेट टू ईच अदर, दैट्स थ्रू द प्राइवेट आईपी एड्रेस. You want to access from outside internet, for that you will need a public IP address. Okay, so you want to make your server accessible from outside, बाहर से आप उसको remote access कर सको, बाहर से आप उसको access कर सको, तो then you need to have a public IP address. Okay, so these all are six most common, most important component which you need. Rest all few components are optional. Now I will go and show you how that portal, how that Azure portal looks like, how you can create that, and how you can start using it without a single penny. Let me take you guys over there. All right, I will go ahead and open up Google. ओके, सो इसका पोर्टल जो है उसका नाम है portal.azure.com, portal.azure.com. It is directly taking me into my account. I'll just go and log out from this. मैं इसको लॉग आउट करता हूँ, साइन आउट. ओके, अब आप अपना कैसे आप अपना सब्सक्रिप्शन क्रिएट कर सकते हैं. आप कोई सा भी आईडी, एक ईमेल आईडी यूज कर सकते हैं. आई विल रिकमेंड टू हैव एनी ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट आईडी. तो माइक्रोसॉफ्ट का के डोमेन कौन कौन से हैं, ईदर यू कैन गो हॉटमेल और आउटलुक. ओके, outlook.com, you go outlook.com, क्रिएट अ फ्री अकाउंट, और hotmail.com, क्रिएट अ फ्री अकाउंट. ऐसे तो आप जीमेल से भी कर सकते हैं, बट आई रेकमेंड, बिकॉज दैट्स अ माइक्रोसॉफ्ट डोमेन, सो ऑलवेज इट विल सिंक बेटर. आपको कभी फ्यूचर में उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा, और ऑलवेज इट विल वर्क वेरी स्मूथ विद दैट. ओके, सो आई विल रिकमेंड टू हैव दिस वन. सो देखो, मैं एक जीमेल का भी एग्जांपल बताता हूँ. मेरे पास एक जीमेल अकाउंट है मेरा. ओके, and I'm just putting that and I'm just getting inside. Okay, now I'm getting in. Mhm. Okay, okay, I'll go ahead with that. Okay, now let's see. I'm entering inside.
अब जैसे ही आप लॉग इन करेंगे आपको ये आएगा, ओके, लिमिटेड और नो एक्सेस। ये लिमिटेड एक्सेस है, आई एक्नॉलेज, ये मेरा पेड अकाउंट नहीं है, ओके। तो ये फ्री अकाउंट है, फ्री आप ऐसे लॉग इन करेंगे। अब आप देखिए, जैसे आप फर्स्ट टाइम अकाउंट क्रिएट करते हैं और portal.azure पर जाते हैं, यू लुक एट दिस, स्टार्ट विथ एन अजोर फ्री ट्रायल। आपको ये फ्री ट्रायल मिलता है, यू जस्ट कैन क्लिक हियर स्टार्ट एंड यू गेट स्टार्ट फ्री। स्टार्ट फ्री पे आप क्लिक करोगे तो आपको $200 का क्रेडिट मिलेगा। $200 और 30 days, विच एवर एंड्स फर्स्ट, दोनों में से जो भी पहले एंड होगा वो। सो यू जस्ट गो एंड क्रिएट दैट अकाउंट, enable this, provide your all of the details and go forward, you will get into it. इसमें आपको क्या होगा कि आपको पॉपुलर सर्विसेज फ्री फॉर 12 मंथ, कई सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो 12 मंथ के लिए फ्री होगी। 55+ सर्विसेज ऑलवेज फ्री, हमेशा के लिए फ्री है। और कुछ सर्विसेज और उसके अलावा जो पेड सर्विसेज हैं उसके लिए आपको क्रेडिट मिलता है 13,000 का। तो 13,000 का क्रेडिट या फिर 30 days, दोनों में से जो पहले एंड होगा, 13,000 में आप सब कुछ ट्राई करके देख सकते हो। ऑलमोस्ट एवरीथिंग यू कैन ट्राई, यू कैन लर्न फ्री ऑफ कॉस्ट, ओके। This is how it is. So you can go ahead with this. I'm just going to sign out. I will go into my paid account. Okay. Okay. I'll go sign out. So I'm into the system now. It is good. You're signed out, बोल रहा है. No, I will not close. I'll go port. Okay. Close के लिए बोल रहा है. Okay. Close it. Portal.azure.com. I'm going back and I'll log into my paid account. This is my paid subscription account, so I will prefer to use this one. Okay, and sign in. Next, it is multi-factor authentication, so it will ask me a code as well. Okay, this is my mobile's last 4 digit, and it will send me a code. Let me check out the code. Okay, 3839902. 3839902. Done. No thanks. I don't want to do anything right now. I'm in, guys. So I'm inside my account. Okay. अब यहां पर देखो, दिस विल बी योर डैशबोर्ड। अच्छा, ये कोई लर्निंग का अलग सा डैशबोर्ड नहीं है। वेदर यू आर एन इन्फोसिस, वेदर यू आर योर पर्सनल अकाउंट, एवरीथिंग, whenever you go, whatever विच एवर बिग कंपनी, इट्स सेम। आपका लर्निंग का भी यही होगा प्लेटफॉर्म, आपका पोर्टल, और आपका रियल प्रोडक्शन का भी यही होगा, राइट। सो वट एवर यू आर लर्निंग, वट एवर यू आर डूइंग, इट्स रियल, राइट। तो ये आपका, इसको कस्टमाइज कर सकते हो, उसके लुक एंड फील्स को, रिसेंट एंड फेवरेट्स एंड ऑल दोस थिंग्स, ये आप कर सकते हो। यू जस्ट गो हियर ऑन दिस 3 लाइंस एंड यू हैव ऑल सर्विसेज। यहाँ पर ऑल सर्विसेज में आपको सारी सर्विसेज माइक्रोसॉफ्ट की दिखेगी। एआई एंड मशीन लर्निंग से रिलेटेड ये सारी 22 सर्विसेज हैं। एनालिटिक्स से रिलेटेड 21 सर्विसेज अवेलेबल है। कंप्यूट से रिलेटेड 36 सर्विसेज अवेलेबल है, ऑल ऑफ दिस सर्विसेज। कंटेनर से रिलेटेड 9 सर्विसेज अवेलेबल है, ये कुबरनेटीज और सब कुछ यहाँ पर है, देखो। डेटाबेस से रिलेटेड 21 अलग अलग तरह के डेटाबेसेस हैं यहाँ पर, ओके। डेवॉप्स 23 सर्विसेज आर अवेलेबल।
जनरल 24 सर्विसेज आर अवेलेबल। हाइब्रिड एंड मल्टी क्लाउड के लिए 24 सर्विसेज आर अवेलेबल। आइडेंटिटी दैट मीन्स एक्टिव डायरेक्टरी एंड यूजर मैनेजमेंट के लिए आपके पास ये 15 सर्विसेज हैं। इंटीग्रेशन के लिए सर्विसेज हैं। ओके, इंटरनेट ऑफ थिंग आईओटीज के लिए सर्विसेज हैं। ओके, मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस के लिए सर्विसेज अवेलेबल है। ओके, ऑल ऑफ दीज। माइग्रेशन, ये देखो माइग्रेशन करने के लिए ये सारी सर्विसेज अवेलेबल है। अजोर डेटाबेस माइग्रेशन, अजोर माइग्रेशन रिकवरी सर्विसेज वॉल्ट, अजोर स्टैक एजेंट, डेटा बॉक्स गेटवेज एंड ऑल ऑफ दिस थिंग्स। इससे आप सब कुछ कर सकते हो। मिक्स रियलिटीज, मॉनिटरिंग से रिलेटेड सर्विसेज। ओके, ये प्रोमीथियस को इसने टेक ओवर, बिग डेटा, प्रोमीथियस सबके एजेंट अवेलेबल है। नेटवर्किंग से रिलेटेड 35 सर्विसेज अवेलेबल है। सिक्योरिटी से रिलेटेड फायरवॉल्स एंड एवरीथिंग। स्टोरेज से रिलेटेड सारे सर्विसेज, वेब एप्लीकेशन से रिलेटेड सारे, ये सारे। तो अब यदि आपको फायरवॉल चाहिए तो सिक्योरिटी से रिलेटेड देखो आपके पास ये फायरवॉल है, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, या डेडिकेटेड डिफरेंट फायरवॉल चाहिए, ये फायरवॉल है। ये सारी माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज हैं माय फ्रेंड। यदि आपने डिसाइड किया कि ओके मैंने डेटा सेंटर बनाया लेकिन मुझे माइक्रोसॉफ्ट का फायरवॉल नहीं चाहिए, ओके, आई डोंट वांट माइक्रोसॉफ्ट फायरवॉल, व्हाट आई वांट इज आई वांट ए FortiGate फायरवॉल, मुझे FortiGate का फायरवॉल चाहिए। व्हाट यू डू, यू जस्ट गो हियर एंड टाइप FortiGate firewall. Okay, FortiGate, click here, this is, click here marketplace, FortiGate firewall, marketplace में सर्च करके बता रहा है FortiGate firewall. Okay, now wait, let it go, FortiGate का firewall create हो जाएगा. Okay, now again one more thing I'll show you. FortiGate, okay, marketplace पर आप हो, you just can go to marketplace, this is better. मार्केट प्लेस पर आप आ जाओ और मार्केट प्लेस में आप सर्च करो। ओके, ये मार्केट प्लेस है, यहां पर आपके पास सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। यहां पर आप सर्च करो FortiGate एंड एंटर। ओके, सो FortiGate इज अवेलेबल हियर। ये FortiGate फायरवॉल्स के इतने सारे फ्लेवर्स अवेलेबल है, आपको कौन सा चाहिए? लेट्स से आई डोंट वांट अ FortiGate, आई वांट लेट्स से Palo Alto, go and take it, Palo Alto firewalls are available. I want a Cisco, all the Cisco product, all the Cisco products are available here. Okay, okay, 1 to 20 of 100 result, these many, whatever you want you can. Cisco ASA, Cisco ASA firewall I want, I got it, Cisco ASA firewall, I can just take it, create it. So this is how guys, so all third party product also is available on the cloud, whatever you want. Okay, it's a complete data center you can build. Now I will take you very quick example with how quickly I can make a server and how quickly I can make this accessible from outside. Okay, I'll give you a quick example. Let's say यहाँ पर देखो ये है virtual machine. ओके, अब कोई भी वर्चुअल मशीन या कोई भी सर्विस आप क्रिएट करते हो तो उसके लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि आप एक कंटेनर क्रिएट करें, रिसोर्स ग्रुप, दैट इज कॉल्ड रिसोर्स ग्रुप। तो उस कंटेनर के अंदर सारे कंपोनेंट क्रिएट होंगे,
जैसे कि अभी अभी मैंने बताया था कि जब आप एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं, उसकी करस्पॉन्डिंग सर्विसेज और कंपोनेंट क्रिएट होते हैं, तो वो सारे किसी एक मैनेजेबल कंटेनर के अंदर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं रिसोर्स ग्रुप। तो ये देखो, दिस इज अ रिसोर्स ग्रुप, जस्ट क्लिक ऑन दैट। Right now there is no resource group. Create a resource group. Okay. Now name, give the name whatever you want. Test, let's say 101. These all are the Microsoft data centers. कौन सी data centers में, कहाँ के data center में आपको करना है? I will prefer AWS. I will talk more and more about regions. This is very important topic in the next session. आपको कोई प्रोजेक्ट नाम देना है, टेस्ट प्रोजेक्ट, whatever नेम आप देना चाहते हो, ये टेस्टिंग पर्पस के लिए, मतलब ये प्रोजेक्ट उसका नेम और वैल्यूज आप देते हो ताकि लेटर ऑन आप उसके टैगिंग से आप उसको आइडेंटिफाई कर सको। नेक्स्ट, वैलिडेट हो गया, क्रिएट। मेरा एक कंटेनर क्रिएट हो गया। ओके, अब इस कंटेनर में मैं जो भी सर्विस चाहिए वो क्रिएट करूंगा। ओके, दिस इज रेडी। आई विल गो टू ऑल सर्विसेज। ये वर्चुअल मशीन है, आई विल जस्ट क्लिक ऑन दैट। अब मैं हम क्या करते हैं, एक छोटा सा वेब सर्वर क्रिएट करते हैं, एक वेब एप्लीकेशन, और उसको पब्लिश करके देखेंगे क्विकली। सो देखो कितने क्विक मोमेंट में हम एक वर्चुअल मशीन, एक सर्वर क्रिएट कर लेते हैं और उसके ऊपर सर्विस रन करके एक्सेसिबल बना लेते हैं। सो आई विल क्लिक ऑन क्रिएट, क्रिएट ए वर्चुअल मशीन। ऑलराइट, बहुत सारे इस पे इनपुट्स देने पड़ेंगे। आई विल कीप सम ऑप्शनल इनपुट्स, और इन सारे इनपुट्स, रीजन्स, अवेलेबिलिटी ऑप्शन, अवेलेबिलिटी जोन, इन सब के ऊपर एक एक डेडिकेटेड टॉपिक्स है, डेडिकेटेड चैप्टर्स हैं। हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम चूज करेंगे, ये हमारा सब्सक्रिप्शन है, रिसोर्स ग्रुप, दिस इज मैंडेटरी। वर्चुअल मशीन का नाम आपको क्या देना है? लेट्स से डेमो VM1। रीजन ऑब्वियसली जो आपका रिसोर्स ग्रुप का रीजन है वो आ गया। अवेलेबिलिटी ऑप्शन, अवेलेबिलिटी जोन, मतलब आप कैसे इसका रिडंडेंसी मेंटेन करना चाहते हो कि एक आपका डेटा सेंटर फेल हो गया तो ये दूसरे डेटा सेंटर से चलना चाहिए, उसकी कॉस्ट भी आपको लगेगी। राइट नाउ आई विल हैव नो इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, सिक्योरिटी आई विल गो विद द स्टैंडर्ड। Operating system, which operating system you want to take it up? You have so many. Okay, many operating systems are appearing over here. आप इनमें से कोई ले सकते हो, या इनमें से कोई नहीं लेना है आपको, you want to have more, see more. Okay, you, when you click on a see more, you will have much more other operating systems appearing over here. Okay, whatever you want. So look at this, 406. Okay, one of 406, these many, I'm just 8,406 pages hai. You search here, filter out, and you can search. Okay, I'll close. I will take any of the operating system right from here. Let's say I want to take it up, Ubuntu. I will just click and take it up. Ubuntu मैंने ले लिया. Now come back below. This is your VM architecture. आप ARM 64-bit architecture लेना चाहते हैं, या 8086 x86 architecture लेना चाहते हो? I prefer to have this. इसके ऊपर आपका OS भी डिपेंड करता है, क्या आपका ARM 64 आपका OS सपोर्ट करता है? That knowledge you should have. So I will take this one. This is supported by every OS now. साइजिंग देखो, यहाँ पे साइज है, क्या चाहिए आपको? स्टैंडर्ड B2S, 2 vCPUs और 4 GB मेमोरी है, दो वर्चुअल सीपीयू प्रोसेसर्स और 4 GB मेमोरी। इट इज कॉस्टिंग मी 2384 पर मंथ। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ज्यादा परफॉर्मेंस चाहिए, आई कैन गो अहेड एंड चेंज। ओके, मुझे 8 GB चाहिए, मुझे 16 GB चाहिए, 4 CPU चाहिए, वट एवर यू वॉन्ट, यू कैन चेक इट, यू कैन चेंज। इससे ज्यादा चाहिए, गो टू सी मोर, एंड यू हैव many more different configuration, different series and different configurations available. You can take it up. I will explain and talk more about that, guys. Okay, let's say जैसे ये B2S में ले रहा हूँ, 2 CPU, इसमें 2 vCPUs मिलेंगे, 4 GB मेमोरी मिलेगी, और डेटा डिस्क मैक्सिमम इट सपोर्टेड 4। इसका मैक्सिमम इनपुट आउटपुट पर सेकेंड, ओके, 1280 Mbps रहेगा। ओके, लोकल स्टोरेज इसका 8 GB मिलेगा आपको, और OS डिस्क 127 GB का समथिंग मिलेगा, 127 GB का।
So this is what all details about this. Okay, whichever you want, you can choose it. I will go basically with this one, no problem. Password, what password and username and password you want to create? I will create users, whatever you want. Password, whatever you want to give. I gave my password. Which protocol you want to allow, guys? मैं HTTP और SSH allow कर देता हूँ. HTTPS भी रखना, you can keep it. I'll go to the next disk. देखो इसका by default OS disk इसके साथ है. ओके इसके साथ डिफॉल्ट इमेज 30 GB का आ रहा है. प्रीमियम SSD डिस्क है. आई विल कीप एज इट इज. नेटवर्किंग, नेटवर्किंग में इट इज बाय डिफॉल्ट क्रिएटिंग अ प्राइवेट नेटवर्क फॉर दिस. 10.0.0 का डिफॉल्ट नेटवर्क ले रहा है ये. एक पब्लिक आईपी एड्रेस क्रिएट कर रहा है. पब्लिक आईपी एड्रेस ईस्ट यूएस की जो रेंज होगी उस रेंज से मिलेगा. ठीक है, I'll keep it by default. I'll go next. इसको कस्टम कैसे क्रिएट करते हैं, that everything in detail, each and every details will see. मैनेजमेंट, ओके. आइडेंटिटी सर्विस मतलब आपके पास क्या एडी वगैरह एक्टिव डायरेक्टरी वगैरह है. एक्टिव डायरेक्टरी के डोमेन में आपको ज्वाइन करना है. दिस ऑप्शंस आई डोंट हैव राइट नाउ एनीथिंग. वी आर जस्ट क्रिएटिंग अ वैनिला प्लेन सिस्टम, इंडिपेंडेंट सिस्टम. आई विल जस्ट स्किप दिस. मॉनिटरिंग, क्या आप इसको मॉनिटर करना चाहते हो? इनेबल मैनेज स्टोरेज अकाउंट, इसके लिए आपको लॉग्स स्टोर करने के लिए स्टोरेज लगेगा. आई डोंट वांट इट. ओके, दैट विल बी कॉस्टिंग यू एक्स्ट्रा. मॉनिटरिंग के टॉपिक में हम इसको डिस्कस करेंगे. ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ क्या आप कोई एक्सटेंशन, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहते हो? सेलेक्ट एन एक्सटेंशन टू इंस्टॉल. इसमें हजारों टूल्स अवेलेबल है. जो भी टूल आपको उसके साथ इंस्टॉल करना है वो आप चूज करो और दैट विल गेट इंस्टॉल्ड अलोंग विथ योर इमेज ऑटोमेटिकली. आई डोंट वांट एनीथिंग. कोई एप्लीकेशन चूज करना है, सेलेक्ट एन एप्लीकेशन, दैट एप्लीकेशंस विल गेट इंस्टॉल अलोंग विथ दैट. ओके, आई डोंट हैव एनीथिंग राइट नाउ. आई विल जस्ट क्लिक नेक्स्ट. टैग, आपको आपके प्रोजेक्ट का टैग टैग नेम देना है ताकि आप उस नाम से इसको आइडेंटिफाई कर सको. 13 कंपोनेंट क्रिएट हो रहे हैं जो जो ऑप्शंस हमने चूज किए हैं उसके अकॉर्डिंग, और वो सारे एक रिसोर्स ग्रुप में क्रिएट होंगे. आई विल शो यू. अब मैं रिव्यू के लिए जाता हूं कि कोई एरर है क्या उसमें. आई विल क्लिक ऑन रिव्यू. इट विल टेल यू एनी सिलेक्शंस और एनी सर्विस हैज गॉट एनी एरर. इट विल टेल यू. अब देखो इसने कैलकुलेट करके बता दिया 3.2670 रुपीज पर आवर. अब आप जितने मिनट जितने घंटे यूज करोगे your charge would be that, and overall for a 1 month you are using, it will be around 3000 or 2000 something it was showing there. that ठीक है, I am agreed with this. I'll just go and create. अब देखो एक वर्चुअल मशीन कितने सेकंड में क्रिएट हो जाता है. यू जस्ट सी दिस. ओके देखो. ओके सी, योर सर्वर इज रेडी गाइस. ओके, आपका सर्वर रेडी हो गया. नाउ गो टू रिसोर्स. यहां पर जाकर आप देख सकते हो क्या डिटेल्स है, क्या आईपी एड्रेस है, क्या सब कुछ है. All the details you can see. It is running. There's all details. It is your subscription ID. This is your public IP address, and all other things. This is your public IP, private IP address. अब मुझे इसको access करना है. I'll just copy this public IP address. I'll just open my putty. This putty tool, might everybody know about this. I'll put my public IP address here and open. Yup, I got an access. AZ user 101, जो भी आपने यूजर नेम दिया था. पासवर्ड n. Yep, I got it. I got my server. Okay.
अब जब हम कोई सर्वर क्रिएट करते हैं, सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है? वी शुड अपग्रेड इट. ओके, नॉट अपग्रेड, अपडेट इट. Okay, so it is a local user, so I'll go sudo super user. Now I will update. So simply you can update apt-get update -y to update this. देखो ये अपडेट हो जाएगा. डन. ओके, डन गाइस. ओके, अब मुझे क्या करना है? इसमें मुझे वेब सर्वर इंस्टॉल करना है. वेरी सिंपल. व्हाट आई कैन डू? sudo apt-get install. वेब सर्विस में इंस्टॉल कर रहा हूँ. sudo apt-get install apache 2. Okay, I will just install Apache web server. Enter. Okay, I will install Apache server. All right, so it is in quick time. It is installing Apache web server over there. Okay, so let's begin with that. Let's complete this installation. Okay. ओके, प्रोसेसिंग ट्रिगर डन. अब मुझे क्या करना है? इसको अपाचे सर्विस को स्टार्ट कर देना है. सिस्टम ctl start apache 2. Okay, now systemctl status, I can just check status. This is running. एक्टिव और रनिंग बता रहा है. Cool, that is fantastic. Okay, so once it is running, now my web service is accessible. अब मैं इस पब्लिक आईपी एड्रेस को बाहर से एक्सेस करके देखता हूं. देखो, this is a public IP address. I'll just go and type here http and colon and put that public IP address and enter. See that Apache web server is coming. Okay. अब ये वही सर्वर है कि नहीं कैसे पता चलेगा आपको? You can modify that web page. तो default page है. How you can? cd, you can go where ये location है इसकी www and html. Okay, you go to this location ls. यहाँ पर ये फाइल है index.html. ये index.html फाइल से आपको ये वेब पेज आ रहा है. I can do like nano index.html. I can just open up this. ये आपका उसका html पेज है. Okay, ये उसका css config. If anybody knows about that development things, you can check it out. Page headers and everything. Okay, ये उसका हेडलाइन है. यहाँ पर देखो, ये वेब पेज दिख रहा है. Apache to default page. This is coming from here. So I will just go and change it.
Okay, control O to save, enter. ये control O to write and control X to exit. Okay, now let me go here and try to refresh it. This is our page, right? So this is how it's working. Now I'm just copying this, putting into the chat. Okay, just put this, just click on this and see whether you are able to, you are able to get that. Is it accessible, guys? Is it accessible for you, everyone? Okay, now I'm unmuting everybody. Anybody has got a question? I'm open to answer your questions, guys. Question and answers time. Anybody has got any questions, you can ask me. I'm open. So this is Yes, how. sir. Okay. Now, a quick question once again. So once you are done with this, okay, you want to delete this, how you want to do? Simple. Okay, ये आपने create कर दिया, आपने 10 मिनट practical किया and you want to delete. What you should do is go here, resource group में जाओ, simple method I'll teach you and then later on I'll teach you everything. देखो ये resource group है, आपके सारे services उसके यहाँ पर है, ये all of this component here. You just click on delete resource group. Okay, copy, put here name and delete. Resource group delete हो जाएगा. Okay, and that's it. You use a 10 minutes only. Okay, you will be charged only for 10 minutes, whatever, 1 rupee, less than 1 rupees, 50 paisa something. That's it. Now it is deleting. All right, guys, I'm open for question and answers. Mm-hmm. Sir, did you put the recording in Class Plus or something? No, no, no. I'll share you separately for this class recording. Okay, I'll put on the class plus also. Okay. Okay, I'll give you that. Okay, anybody else, guys? Anyone else has got a questions about what we discussed today? Mm-hmm. Anybody else has got a question? Madhav sir, is resource group equivalent to VPC in AWS or how it is? AWS VPC, no, AWS, what is the service? I don't know about AWS part, what service name is for resource group. I think Okay. it is similar to resource group only. Resource group only is there. Okay. Because I know about AWS, so I'm trying to relate the No, terminology with AWS in no. Azure. Okay, so can this pod work without any OS? Somebody is asking me, Raju Sharma is asking, can this pod work without any OS? It has a kernel, it has a mini kernel, and that it takes from the host. Okay,
pod always has got a mini kernel, and that mini kernel connects to your host, and whichever operating system your host you want to assign, Windows or Linux or whichever. Okay, there will be an operating system, but there will be one base operating system. Okay, okay, sir. Okay. Sir, if any company need virtual desktop kind of solution, Mhm. कोई company जो एजुकेशन में है और उनका पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर जो छोटे सिस्टम आते थे सीपीयू, वो सब Mhm. हटा के एक ऐसा सॉल्यूशन चाहते हैं कि उनके जो स्टूडेंट है वो 4 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए लैब करें और Mhm. उसके बाद वो हो जाए, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? ओके, उसके लिए आप एक सर्वर क्रिएट करिए और उस सर्वर पर सर्विस डिप्लॉय करिए, एंड देन वंस योर वर्क इज डन यू जस्ट रिमूव दैट. हाउ मेनी यूजर्स कैन यूज दैट सर्वर? Millions and billions, millions and billions, as many you want. But can they do different kind of work on the same virtual machine by using at the same time? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स, आप वर्चुअल मशीन में ओएस, ये तो बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है. यदि आप मल्टी यूजर मल्टी प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम लोगे तो मल्टीपल यूजर्स लॉग इन कर पाएंगे. यदि आप सिंगल यूजर मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम लेंगे तो एक ही यूजर लॉग इन कर पाएगा एक टाइम पर. दैट डिपेंडिंग अपॉन योर दिस थिंग्स, डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट, यू नीड टू चूज राइट सर्विस, राइट सर्वर. ओके, आप चाहते हो कि 1000 यूजर्स एक साथ एक सर्वर पर लॉगिन करें, तो आप मल्टी यूजर सर्वर 2019, 2016, 2021 यूज करें. उबंटू या लिनक्स, रेड हैट लिनक्स आप यूज करें, इट विल वर्क. लेकिन सबके जो फाइल होंगे वर्किंग, जो वो प्रोजेक्ट सेव करेंगे, वो किस तरह से फिर सबको विजिबल होगा? अगर सब लोग विजिबल, या फिर किस तरह से रहेगा वो? दैट इज हाउ यू वांट टू शेयर. ओके, अब यू जो डेटा होगा वो आपको किसको शेयर करना है, वो डेटा मैनेजमेंट में होगा. यदि विंडोज है तो आपको फोल्डर्स और डेटा और डिस्क आप यू कैन अटैच. राजू, योर क्वेश्चन इज रिलेटेड टू यू हैव अ कस्टमर्स और उसके लिए आपको एक सॉल्यूशन चाहिए. सो दैट इज वन टू वन, दैट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन, दैट इज डाइवर्टिंग फ्रॉम ओके, दिस ट्रेनिंग. ओके. ओके, ओके। Okay, When you anybody else has got search, a questions regarding Azure? Mhm. Yes, yeah, Aishwarya, go when you ahead. when you search firewall in the marketplace, there are Mhm. multiple options, right? And Mhm. everywhere it is written, somewhere it is written SaaS, somewhere it is written application. Mhm. So what is the difference? I wanted to know. So see those firewalls, let's say Palo Alto, you need to know the right product. Okay, जैसे कि आपको Palo Alto आपको deploy करना है तो Palo Alto has got multiple component. Okay, Palo Alto firewall will have a firewall appliance, वहाँ पे लिखा होगा appliance. Okay, Palo Alto Mm-hmm. application, that means panorama, जहाँ से आप central management है, वो appliance नहीं है, वो management Right. applications है. So this is Mm. what that bundle of services. Okay. Fortinet is not just in one firewall, but Fortinet has got hundreds of different product where you have an appliance, that means hardware which is virtual, and application, that means respective applications for Palo Alto infrastructure and services. तो वो अलग अलग चीजें हैं. When I want to Sir, use firewall, so that time I'll use VM and I mean Yeah, that will and be a declare virtual appliance. Yeah, yeah, that's a a virtual virtual appliance. appliance. Yeah, And when I exactly. use it as SaaS, that means what? Then that's an application, then वो आपको Okay, that's in application और just the services में application. Okay. मिलेगी. हाँ हाँ. Then Palo Alto की जो भी applications होगी जो SaaS base होगी, that you will pick it up, Mm-hmm. right? Okay. Yeah. Thank you. So when we are Sir, selecting, what is the learn in Azure engineer learn to services, important services, which is Uh, important? what Azure engineer will learn important services. Very beginning I shared you, like you are an infrastructure, यदि आप infrastructure engineer बनते हैं, मतलब cloud architect, तो cloud architect के लिए major components like your storage, your computing, your network, your active directory, DNS, DHCP, load balancers and so many. So लगभग ऐसे 25 services आप सीखेंगे जो architect से related है.
right? So those all Okay. things are there. So in the Thanks. beginning, I have shown you that PPT where all the course contents are there. I will share you again once again here. Okay, Okay, I'll sir. share you this PDF. Everybody can refer to that. Anybody else? So the last question, coming Mhm. back to the same firewall point. Mhm. So if we select the firewall from the marketplace, Mhm. is it coming the software as a service from there when we Uh, deploy it from the marketplace, or how it yeah, yeah, is? yeah. It is deploying from the marketplace, and for you as a software or a service, okay, you are Okay. taking up. So let's say you are taking up a Fortinet firewall. So Fortinet provided by a Azure. Okay, you are not gonna pay to Fortinet something. Okay, so Azure is bringing up that software as a service or that service as a service to your data center. Okay. So they will be paying for the licenses and they एग्जैक्टली will charge us. लाइसेंसेस या Okay. लाइसेंसेस अच्छा दूसरा दो चीजें हैं उसके लिए दो चीजें होती हैं जैसे कि आपने एक फोर्टीनेट का फायरवॉल लिया सो यू विल पे द लाइसेंस ऑल्सो एंड यू विल पे द कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्यूट एज वेल. Okay. Okay, so Okay. for Okay. example, you're taking a Palo Alto firewall, and that Palo Alto firewall you want to run on 4 processor and 16 GB memory. So that's a compute. You want to Yes. have a 4 public IP address. That is an infrastructure service charge, and then on top of it, your PAN OS license. Okay, so like that. So Azure will charge us for the PAN OS license as well, right? Yeah, whichever component you choose, that will Okay. be according to Okay. that. But which will be very, very costly, very, very cheaper as comparatively you buy a physical appliance at your data center. Absolutely. Yep. Yeah, yeah. और दूसरा, you need not to invest a front. आपको firewall चाहिए किसी project के लिए just for a 2 month, you just take it and use it, right? Right. But किसी Right. project के लिए 2 महीने के लिए भी यदि आपको एक Palo Alto firewall deploy करना है, it will cost you 10 lakh rupees, Absolutely. right? So that way. Sir, I was not part of yesterday session somehow. So No I problem. believe I'll share you. Yeah, Shivam, I will share you recording yesterday's recording. It was very, very important and very interesting one. thank you. Yeah, yeah, sure. Sir, In hello. the Mm-hmm. Sir, will you get those recordings? Yeah, yeah, yeah. You will get that. You will get that. Okay, sir. Is it possible to get these two recordings so we can able to if I will there is try to any share question you we as soon as can. possible. I'll try to share Okay, you sir. guys as soon as possible. Okay. If it is then, sir, if there is any question, we can put that Yeah, yeah, on yeah. tomorrow's Yeah, upcoming yeah. sessions. No problem. So coming session is tomorrow. So you can put whatever queries, whatever questions are there. रिकॉर्डिंग ग्रुप में दे देंगे या फिर जो पर्सनल वन टू वन सर भेज देंगे सर. Yeah, we'll see. We have a mechanism for that. I will share you link tomorrow in this chat box, and you guys can access. ओके सर, ओके. All right. Thank you, sir. Thank you. Yes, yes, yes. Thank you. within the resource group, can we share the resources? I mean, if one resource we have, Yeah. Exactly, exactly. So, yeah, okay. yeah. So you have created resources in one resource group, and Mm-hmm. you want that some other services should use that resources, right? Yeah, yeah. Yeah, you Mm-hmm. can share that. You can share. You can transfer. You can move. Even though those are created in different Yeah, regions. yeah. You can move the Okay. resources anytime, or you can move the services from one resource group to another resource group. Okay. Or you can make services available for the other resource group. For example, take an example. आपने database, you have created a database in resource group, let's say in project one. Project one नाम का आपका एक resource group है, and in that resource group you have created a database, right? But you want that Mm-hmm. that database should be used by project two and project three also. You can make them communicate. You can share that resource to any other resource group as well. That is separately chargeable, the No, sharing? nothing. Sharing and making it accessible is nothing chargeable. Okay, and there is lot many other things as well, like resources आपने create किए हैं एक resource group में एक region में, you can share that to the other resource group to the other region as well.
Okay, we will Mhm. dig down that. It is much Okay. more deeper Yeah. concept in theory. Mhm. Okay, anybody else? Sir, Mhm. I have one question. Mhm. सर वो जो हम लोग फायरवॉल ये लेके जो सर टोपोलॉजी बना रहे हैं, तो ये पालो ऑल्टो और जो भी फायरवॉल और जो भी राउटर स्विच ले रहे हैं, ये क्या सर फिजिकली डेटा सेंटर में अवेलेबल होता है? और उसका सर सर्विस हम लोग एक्सेस करते हैं सर क्लाउड, ये हमारे कंप्यूटर से यूजिंग क्लाउड, और इसका सर वर्चुअलाइजेशन और कोई एज सॉफ्टवेयर की तरह सर यूज होता है, मतलब उसका इमेज जैसे यूज होता है। या ये फिजिकल इस, तो नहीं होता है, ये वर्चुअल है, बट आपका जो डेटा ट्रैफिक है उस वर्चुअल अप्लायंस के थ्रू जाएगा। ओके, अब वो फिजिकल हो या वर्चुअल हो, योर ट्रैफिक विल गो थ्रू दैट अप्लायंस, सो योर ट्रैफिक इज तो फिर encrypted and secure. Okay, nobody else can look at, nobody else can touch, nobody else can tamper that. So that appliance basically is a virtual appliance, but it is just like your physical appliance. ओके, जो मैंने वो फिजिकली जैसा सर्विस देता है, जैसे फायरवॉल है फिजिकली जैसा सर्विस हाँ हाँ, राइट, वो प्रोवाइड करता है, ऐसे ही एग्जैक्टली, प्रोवाइड करेगा वर्चुअली। exactly same. Okay, anybody else, guys? Anybody else has got a Uh, question? in AWS, when we use any instance, if the project is about to end, we can just shut it down. Yeah, That stops it. similar way, Yeah. In similar way this here. case, we Yeah, have to same delete case or we can here. shut down. Yeah, same case here. In AWS, take an example, or AWS or Azure, shut down or terminating the service or shutting down the services is a different use case basically. What to do, when it will be chargeable, when it will be not chargeable, I will explain you. I'll take up a session tomorrow. I will include that topic to dig down and explain more detail about this. But yes, to quick answer, when you don't need, you can delete it, or you can just terminate this. You can just terminate or shut down so that tomorrow you can make it up and use it again back. Okay. So during the shutdown period, will it be chargeable? How much it will be chargeable? I will give you a brief, knowledge share tomorrow on this. Mhm. Okay. Thank you. Yeah. Anybody else has got a question? All right, guys. So that's great. We'll come up tomorrow again, sharp at 9 o'clock with the new topics. Like tomorrow, I'll explain you so many infrastructure related services which are very, very important and base foundation of this. See you tomorrow. Take care and good night. Thanks a lot. Thank you. Bye. Yeah. Bye. Good Thank night. you. Good night. Thank you, sir.